Now the Maritime Anti Piracy Bill 2022. Sri S. Jayasankar to move a motion for consideration of the Maritime Anti Piracy Bill 2022. With your permission, Chairman, sir, I rise to move the motion for consideration of the Maritime Anti Piracy Bill 2022 as passed by Lok Sabha on 19 December 2022 for the consideration of this August House. इस विधेयक से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सहयोग व बढ़ावा मिलेगा। हमारा वैश्विक स्तर पर व्यापार में बढ़ोतरी भी होगी। केवल भारत कानूनी आधार पर अब पायरेसी की गतिविधियों में लिप्त लोगों पर अभियोग चला सकेगा। यह देखा गया है कि समुद्री डकैतों की घटनाएं 2008 से बढ़ रही। अदन की खाड़ी में सोमालिया से समुद्री लुटेरों द्वारा हमलों में एक बड़ी वृद्धि देखी गई। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के पूर्वी तट के बीच व्यापार के लिए हर महीने 2000 जहाजों का आवागमन होता है। अदन की खाड़ी में बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिकों की उपस्थिति से अब समुद्री डाकुओं ने अपना संचालन का क्षेत्र पूर्व और दक्षिण की ओर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे अब चिंता का विषय है। भारत के पश्चिमी तट से उनकी नजदीकी बढ़ जाती है, जो हमारे जहाज के लिए ज्यादा खतरा दर्शाती है। इस विधेयक के आने के बाद से हमारी नेवी या हमारी कोस्ट गार्ड अपनी सुरक्षा उन जहाजों को प्रदान कर सकेगी। मान्यवर, इस तरह के कानून न होने की वजह से 15 फरवरी 2012 को केरल के दो मछुआरे जेलेस्टाइन और अजीज पिंकू केरल के निंदाकारा हार्बर से मछली पकड़ने के लिए गए थे। वे सेंट एंटनी नाव से लक्षद्वीप की ओर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गए। लौटते समय उनका सामना सिंगापुर से जा रहे ऑयल टैंकर एंड्रिका लिच्छवी से हुआ। यह इटली का जहाज था। जहाज पर दो मैरीन सल्वाटोर गिरोन और मसीमिलियानो लटोर ने जेलेस्टाइन और अजीज को गोली मारकर हत्या कर दी और तब उन पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट में केस चला, लेकिन केस अंजाम तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की वजह से भारत को अपने देश में इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामला बंद करना पड़ा। तमाम कानूनी प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और पीसीए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कोर्ट ने 21 मई 2020 को आदेश दिया कि इतालवी मैरीन पर कोई आपराधिक मुकदमा अब भारत में नहीं चल सकेगा और उन पर कार्रवाई इटली में होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देता हूं कि आपने इस तरह का बिल लेकर के आने वाली इस तरह की घटनाओं को रोकने का काम भी किया है। माननीय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि तमाम माननीय सदस्यगणों ने कुछ शंकाएं जाहिर की हैं और इस बिल में जो विधेयक में जो भी कमियां हैं उन कमियों को सुधार करके लाया जाए। आज का यह विधेयक जिस विषय के ऊपर है वो विश्व के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि समुद्री व्यापार का विश्व का लगभग 80% से अधिक व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। तो मानी हुई बात है कि वहां की सुरक्षा सुनिश्चित करना विश्व और भारत के व्यापार की सुगमता और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। और उसमें जो पायरेसी होती है, यानी जल दस्युता के द्वारा उस व्यापार को कितना नुकसान होता है, इस संदर्भ में अमेरिका के कोलोराडो के एक अर्थ फाउंडेशन ने एक असेसमेंट किया था। उसके अनुसार जलदस्युओं के द्वारा यानी मैरीटाइम पायरेसी के द्वारा औसतन दुनिया में 7 से 12 बिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था में नुकसान होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस चीज का सभी देशों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जहां तक भारत का प्रश्न है, तो हम जानते हैं कि दुनिया में पायरेसी की दृष्टि से, मैरीटाइम पायरेसी की दृष्टि से 10 सबसे संवेदनशील जो स्थान अंकित किए गए हैं, उसमें से कई स्थान हिंद महासागर में है। खासकर इंडोनेशिया और अदन की खाड़ी के क्षेत्र इस दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माने जाते हैं। भारत के लिए तो एक और उल्लेखनीय बात है, हम दुनिया में इकलौते राष्ट्र हैं जिसके नाम पे एक महासागर है, हिंद महासागर और द इंडियन ओशन। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया का 70% से अधिक व्यापार कवर्ड होता है और यहां भारत के सामरिक हित भी जुटे हुए हैं और आर्थिक हित भी जुटे हुए हैं। स्थिति कभी कभी यह भी हो जाती है कि पिछले दिनों में इस तरह के समाचार आए थे कि अदन की खाड़ी के पास जलदस्युओं के आतंक के चलते हुए भारत के मालवाहक जहाजों को नौसेना के द्वारा एस्कॉर्ट करना पड़ता है, यानी नेवल एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ती थी। इस कारण से मुझे लगता है कि इस विषय पे बहुत गंभीरता की आवश्यकता है। यह इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसमें लगभग 66,000 किलोमीटर से अधिक की दुनिया के भिन्न भिन्न देशों की कोस्ट लाइन आती है। वर्ल्ड का मेजॉरिटी ऑयल प्रोडक्शन का एरिया हिंद महासागर के क्षेत्र से जाकर गुजरता है और
भारत के संदर्भ में तो कहा जाए 90 से 95% का हमारा ऑयल का ट्रेड इसी क्षेत्र से जाकर जाता है। 68% हमारा टोटल वॉल्यूम इसी क्षेत्र से ट्रांसपोर्ट होता है। और एक अन्य दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, इसमें हमारा ग्लोबल शेयर 30% है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं उसका भी ट्रांसपोर्टेशन इसी क्षेत्र से होता है। अतः जहाजों की सुरक्षा हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में बड़ी व्यापक खनिज संपदा इत्यादि भी पाई जाती है। जहां तक हम ये कहना चाहेंगे कि सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही नहीं, हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक हैं, 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, जो 45% एरिया हमारा इसी क्षेत्र से होकर आता है। और वर्ल्ड का जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन है, उसका 11% क्रू भारत से आता है। तो इससे यह समझ में आता है कि भारत और भारत से जुड़े हमारे सामुद्रिक व्यापार के हित कितने अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इसमें कानूनी रक्षा कवच की बहुत आवश्यकता थी, जो यह बिल प्रोवाइड करने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में वैसे तो कानून के जानकार हमारे प्रतिपक्ष में भी और हमारे सत्ता पक्ष में बहुत लोग बैठे हैं। मुझे एक ऐसा स्मरण आता है कि एक घटना है पुरानी, जिसकी वजह से समझ में आता है कि कानून यदि इस विषय पे मजबूत ना हो तो क्या समस्या होती है। 2005 का MV एलेंड्रा रेनबो केस, ध्यान होगा कि एक जहाज जा रहा था जो पनामा से जापान की तरफ जा रहा था। भारत के समुद्री क्षेत्र के पास पता चला अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से कि उसके ऊपर जलदस्युओं ने कब्जा कर लिया है। भारत के कोस्ट गार्ड ने जाकर उनको हिरासत में ले लिया, उन पे मुकदमा चला। 2003 में लोअर कोर्ट से उनको सजा हुई, परंतु 2005 में मुंबई उच्च न्यायालय से वो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर छूट गए। और उस टेक्निकल ग्राउंड में एक टेक्निकल ग्राउंड ये भी था कि जो टेरिटोरियल वाटर है हमारा, वो जिस जगह से पकड़े गए हैं, वो टेक्निकली भारत के जुरिस्डिक्शन में, यानी भारत के लॉ के परव्यू में आता है या नहीं। इससे समझ में आता है कई बार बड़ी बड़ी घटनाओं से कारण हुई असुरक्षा भी कानूनी सुरक्षा कवच अगर बेहतर ना हो तो उस कारण से समस्या आती है। और मैं कहना चाहूंगा कि इस बिल ने यह करने का प्रयास किया है। If it is an outcome of international convention, universal human rights is more prominent and we live in human rights regime, then how could this definition of stateless person be there? Do we accept that anybody in the world could be stateless? We do not visualize this conception. No one can be stateless under the human rights regime, which is against the human rights policies. Therefore, this stateless person definition, in my humble submission, should be removed. Otherwise, we will be recognized in a situation which will have an impact otherwise in other field of the society. And then the question comes about the penalty. Now, the definition of piracy is very wide. Now, I am not going to waste time reading this, but what is the offense? Whoever commits any act of piracy, the act of piracy is very wide, shall be punished with imprisonment which may extend to imprisonment for life or with fine or both. I can accept. When this is a statutory provision being made in 2022 by the government of India, where the father of nation is Mahatma Gandhi, with death or with imprisonment for life if such person is in committing the act of piracy causes death or an attempt thereof. Even if somebody alleges that he have attempted to commit death, then he will suffer death penalty. Death penalty is an obnoxious concept which should be removed from this statute. I would invite the Honourable Minister to reconsider this. Other punishments are quite harsh that can be definitely inflicted upon the person who has committed an offence. When you come to the offence part, whoever commits any act of piracy, now this act of piracy means the act of piracy as defined in the act, no issue. So, of course, there is no aircraft piracy now anymore. So that is why I'm saying that explanation is also not required. But what I am a little surprised that in clause 3, 2 proviso, and in addition, all shall also be subject to restitution or forfeiture of property involved in commission of such offence. Generally, if there are provisions of restitution and forfeiture, they also provide the procedure. Here, what is the procedure of forfeiture is not provided in this act. We have seen from 80s when acts were enacted and forfeitures were provided. Initially, it used to be struck down by the court
as being arbitrary because there was no defined procedure. So maybe you will have to bring the procedure of restitution and forfeiture. And let me also tell you that the imprisonment part will continue to look very harsh. So there are many countries in this world who don't accept capital punishment. To name a few: USA, Kenya, Italy, Australia, Sri Lanka, and maybe others also. Now, the moment you bring capital punishment, all your treaties and conventions will go for a toss because their jurisdiction, legal jurisdictions, don't accept death penalty. So I don't know how you will be able to align your clauses with their preferences, because if the two don't match, there will be problems between two countries' legal jurisdictions. Then coming to clause 7, I mean, where you say that the authorized personnel may either generally or on suspicion that a ship is engaged in piracy on high seas shall board such ship and arrest the personnel or seize the pirated ship and property on board. Now, this is what I am a little surprised. On suspicion, you are entering a ship, but you can only arrest a person if you are prima facie convinced that an act of piracy has taken place. You could also do it if there was an attempt being made, because attempt is also made punishable here. Planning normally is never punishable. The only provision in IPC where planning is punishable is dacoity. A dacoity is a punishable offense under IPC, but planning otherwise is not a punishable offense. The problem that I see here is on suspicion you enter. You also arrest a person. You also forfeit, you seize his property. Now, what are you going to do with this property and with the person if there's no offense? How will you deal with him? This is something which you'll have to ponder over, and I'm sure it will be a lawyer's paradise to argue such cases in courts of law. Again, if we go a little further, you have rightly designated, you have rightly said that the central government, in consultation with the Chief Justice, will designate courts. Now, these courts are also courts of sessions. Question again is, when you have an overcrowded docket in courts, are you giving them extra judges for these offences, or it's the current number of judges who will also now be burdened with these offences and actions? So the problem is, in India, we don't see that, we have no impact assessment of our legislation. We legislate and then see the impact falling on the judiciary or the bodies authorized to take upon such action. So this is an issue which you will have to discuss with the judiciary if they would want to increase the number of judges, especially the maritime courts would be in the coastal area where such offences could be reported and tried. Again, this is not a case where this is not an act which will be covering IPC offences. If you recollect the Italian case, the Italian sailors, I think those were, I think, naval personnel. Yes. Under a mistake of fact or mistake of something, they shot dead some fishermen, and they had to be tried as under IPC offences. Now, those IPC this is the piracy bill, so that part is not going to be covered under this bill. So I suppose in those cases, people will still have to go to the regular courts. It will not be covered by designated courts, because that is not a coverage under this bill, sir. Again, your section clause 11 says there's a high level of presumption. Anybody caught with ammunition is deemed to have committed an offence under this act. Now, arms, ammunition, explosive, other equipments, there's evidence of force, threat, and all that. The problem here very often is you are catching somebody on the high seas. He's carrying ammunition. How do you prove that this is for piracy?
and especially when it's when you're talking of the suspicion provisions. So there is no offense happened. There is no evidence of abetment happening also. But you have only caught a ship on the high seas where some people are moving suspiciously, or maybe they're carrying weapons, but carrying weapons for their own protection also is not unusual these days. So that's what I'm trying to say, that these provisions of presumptions sometimes become very harsh. And what happens here is, if I am caught on the high seas by the Indian personnel, I'm just saying as a matter of record, if I'm caught on the high seas, I have a couple of guns with me, and it's presumed that I'm a pirate. It will be presumed that I'm a pirate, and I'll be indulging in an act of piracy. Now it is for me to prove my innocence. If I can't prove my innocence, then I have to be convicted, and that conviction is going to be 10 years. So, as I said, all these provisions are good to read and to look at. But the moment when it comes into practice, we know that it's not easy. And especially your bail provisions. Now, in the bail provisions, I don't know why, this twin test, which is being deprecated by the entire legal community, even the Supreme Court judgment in the PMLA case, is now being reviewed at the behest of the Chief Justice's order after the judgment. Now, we again come back with the twin test. Now, the twin test is, sir, that if you ask for bail, and in that bail application, if the prosecutor says there's a reasonable ground for believing that he's not guilty, which every prosecutor would say in every case, that I have full grounds to believe that the man is guilty, and then it says, and that he's not likely to commit any offense while on bail. Now, how can anybody, in what way can I prove to the court that except by giving an affidavit or a word or a bond, that I will not commit an offense? Now, on this ground, this twin test is being criticized everywhere. Bail, as a matter of fact, is a rule, as Justice Krishna Iyer would say. Bail is not a trial. You're not imprisoning him for an offense. You only caught him for investigation. Now, once you've completed your investigation, put him to conditions so that he can't run away, so that he produces himself for trial. But the problem here is, as in earlier cases, we in earlier legislations, we incorporated this twin condition. Mechanically, I think this twin condition has again come in this act, and again, in many cases, it will become highly difficult, and it will cause great concern and great problems to people who might get even on suspicion arrested. So I'm arrested on a suspicion. That suspicion cannot be proved beyond, then it is presumed, because I'm carrying ammunition in the high seas, that I'm a pirate. I have to prove beyond doubt that I'm not a pirate, and if I don't prove beyond that, I can't even get bail. So these are very strong provisions. Somewhere the magnanimity of law, the largeness of law, and the jurisprudence which the common law gave us, that a man is presumed to be innocent till proved guilty. Honorable members, the question is that the Maritime Anti Piracy Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 15 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 15 are adopted. Clause 1, the enacting formula, the preamble and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula, the preamble and the title are adopted. Please. Please, Sri S. Jayasankar to move that the bill be passed. Honorable Chairman, sir, I rise to move that the Maritime Anti Piracy Bill 2022 as passed by the Lok Sabha be passed.
Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed.